गुड इवनिंग समस्त को नमस्कार. नॉर्मली लंच पर सेशंस टिके भारी लगे, नॉट जस्ट बिकॉज वी आर फिल्ड अप बट ता पर सेशंस गुड़ा हेवी भी थाए. थैंक यू सो मच ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्रीज संपद सर, वेरी एलाबोरेटली ओडिशार प्राथमिकता कौन आ ओडिशा केउ दिगरे देखिबा को जाउची, विकसित भारत संगे विकसित ओडिशार स्वप्न केमती इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स मानक माध्यम रे पूर्ण हेबा को जाउची ता विषय एते विस्तृत भाव में आम सम्मुखें बहुत कथा रखिले. यही पैनल रे मध्य आम एमती बहुत सारा जिनस उपर आलोचना करने को जाऊँ जहाँ स्टार्टअप्स मानक संबंधी. तेणु आपको आम फ्यूचर प्रूफिंग एंटरप्राइजेस रीइमेजिनिंग स्टार्टअप्स नाम रे पैनलटा रही. आपण मान मन में निश्चय प्रश्न गुड़ाए थी जे स्टार्टअप्स माने कौन. आजिकली बहुत फैंसीफुली ये वर्ड को यूज करा जाउछि, विशेष करी जो माने जेनजी बा जो माने वानाबी एंटरप्रेन्योर्स बोली आमे कहूछु से माने चिंता करूछन्ति कि स्टार्टअप्स माने कौन. आउ जी टिके ताठू पछुआ जनरेशन अछन्ति से माने भाबंती कि जी स्टार्ट कला सी स्टार्टअप. एठी केते जण अछन्ति जी द्वितीय डेफिनेशन सहित सम्मत अछन्ति. जी भी स्टार्ट कला बिजनेस सी स्टार्टअप के जण भाबुछन्ति. बयसर कोनोसी सीमा नै, जेबे भी स्टार्ट कला सी स्टार्टअप. Then we are definitely talking to a very intellectually refined audience, because anybody who starts is not a startup. A startup has two basic elements in it. एटा बुझिले आमे आजिर सेशन टी को आउरी अधिका एनरिचिंग करि परिबा. सी होची स्टार्टअप्स पाखरे सबुटु गोटे बड़ वेपन बा गोटे बड़ हथियार होची तार इनोवेशन. सी जो नूतनत्व बा नवाचार आनिबा को जाउची, जो अभिनवता को नेकी सी निजर गोटे सशक्त उद्यम आरंभ करबा को जाउची, से होची स्टार्टअप रो सबुटु बड़ बळ इनोवेशन. आउ गोटे होची स्केलेबिलिटी, माने अति कम समय भितरे खूब बड़ होई जिबा. In a very short span of time, it has all the potential to scale and expand. That's what a startup represent about. मु जो organization को belong करे, we are an incubation center for startups. So normally people think कि incubator तो हमें, when we talk about incubator, we talk about either eggs or babies. So when you talk about startups, we do a similar nature of work because these are ideas who come prematurely to us. गोटे आइडिया स्टेज रे, प्रोटोटाइप स्टेज रे सेमाने हमो पाखो को आसंती, जेतेबेले सेमाने सोसाइटी रो गुडाए नूतन प्रॉब्लम्स गुडिको को आविष्कार करथांती, से गुडिको को सॉल्व करिवा को इच्छा करंती, किंतु तांका आइडिया टी खूब नुआ जहा मार्केट रे हुए तो पोजीशन हेई पारुनी, लोक माने ता विषय विशेष जानी नहांती. सो वी टेक देम इनटू इंक्यूबेशन एंड ट्राई टू गिव देम ऑल द सपोर्ट वेयर दे कैन बी लॉन्च्ड इनटू द मार्केट इन अ प्रॉपर मैच्योर्ड वे. आपण मान सामने रे जो तीनोटी उद्यमी अछंती एठी, से माने निज निज फील्ड रे दे स्टार्टेड समथिंग एड्रेसिंग ईदर स्टार्टअप्स और प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू द एंटायर क्लाइमेट एंड द इको स्पेस एज वी स्पीक अबाउट. विथ दिस स्मॉल कॉन्टेक्स्ट आई थिंक स्टार्टअप्स कौन आमे बुझी गले, किंतु आज आमे जो स्टार्टअप्स मान को विषय कथा हेबा को जाउछंती से माने सेही स्टार्टअप्स जो माने केवल जे बिजनेस करने कथा भाभी ना, से माने भाभी तांको बिजनेस केमती गोटे इको फ्रेंडली वे रे बा गोटे ग्रीनर अर्थ, गोटे प्लैनेट रो जो कंसर्न्स रही से गुड़े को मध्य एड्रेस करूथुबो. सो वी विल टेक इट फर्स्ट टू आपसे बात करते हैं. श्वेता, आपने बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो क्लाइमेट टेक के बारे में या फिर इको फ्रेंडली स्पेस में काम किया है, आपने उनके साथ बहुत एक्सटेंसिव काम किया है. अगर आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, और ये भी बताएं कि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं इनमें जो अलग होता है दूसरे एंटरप्राइजेस में से, वो क्या होता है. हेलो, सो थैंक यू सो मच मुझे उड़ीसा बुलाने के लिए. ये उड़ीसा में मेरा दूसरा टाइम है एंड आई थिंक सर आपने बहुत अच्छा नेक्सस पावर का एग्जांपल दिया. जो लोग उड़ीसा में हैं वो प्लीज इन दो सिस्टर्स से मिलना, निशिता एंड निकिता. आई थिंक ये फाउंडर्स हैं नेक्सस पावर के, बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं उड़ीसा में. अब आते हैं स्टार्टअप्स में क्या अलग होता है. अलग कुछ नहीं होता, बस भूख थोड़ी ज्यादा होती है. यहाँ पर बहुत सारा यूथ बैठा है. पता है, इससे पहले वाला सेशन विच वाज टेकन बाय माय फ्रेंड आलेख, वो लोग उसमें बात कर रहे थे कि कैसे यूथ बन सकता है क्लाइमेट का पार्ट. जो मैंने देखा या फिर जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, हम सब में ना एक डिजायर होती है कि कुछ करना है. मुझ में भी डिजायर थी कुछ करना है कुछ, तो बिकॉज मैं जिस बैकग्राउंड से आती थी, मेरे फैमिली में 3 जनरेशंस में किसी विमेन ने बिजनेस नहीं करा, कोई विमेन इंडिया से बाहर नहीं गई, कोई विमेन शायद दिल्ली से बाहर नहीं गई. एंड मुझे बहुत ज्यादा था अंदर से कि कुछ तो अच्छा करके जाना है यहाँ से. एंड वो भूख
मेरी क्लाइमेट ने आई वुड से मैच करी. सो इफ फॉर ऑल द यूथ हु इज सिटिंग हियर, क्लाइमेट में अपनी ना एस्पिरेशन ढूंढो. जिस दिन क्लाइमेट में एस्पिरेशन मिलेगी वहां प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगी. नाउ कमिंग टू स्टार्टअप कैसे करना चाहिए या फिर क्लाइमेट का स्टार्टअप कैसे बनाना चाहिए. सी क्लोज्ड 4 दीवारी में बैठ के क्लाइमेट का स्टार्टअप नहीं बनता है. क्लाइमेट का स्टार्टअप बनता है जब आप जमीन पे उतरते हो, ग्राउंड पे जाते हो और देखते हो. फॉर एग्जाम्पल जब मुझे ये करना था तो आई सेड कि ठीक है, अगर क्लाइमेट में काम करना है, सबसे पहले अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं. मैंने सबसे पहले क्लाइमेट के बारे में समझा होता कैसे है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कैसे काम करते हैं. आई थिंक मुझसे पहले जो पैनलिस्ट थे, दे वर टॉकिंग अबाउट दिस 8-year-old गर्ल. प्लीज डोंट फॉलो हर. आई एम सेइंग दिस ओपनली. इट्स वेरी इजी टू कम ऑन द स्टेज एंड से कि भाई ये करो वो करो, बट ऑन द ग्राउंड डेवलप करो. ऑन द ग्राउंड लोगों को जॉब्स दो. ऑन द ग्राउंड इम्पैक्ट क्रिएट करो. जो सर ने एग्जांपल दिया नेक्सस पावर का, मिलो जाके इन 2 बहनों से, देखो ऑन अ डेली बेसिस ये कैसे कोशिश कर रहे हैं अपने स्टार्टअप को स्केल करने की, कैसे कोशिश कर रहे हैं स्टार्टअप में इम्पैक्ट नंबर्स लाने की. सो दिस इज माई स्टोरी, जहां मैंने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाके स्टार्टअप्स को विजिट करा, देखा कि कैसे फैक्ट्रीज बन रही है. और आज हमने लॉन्च करा है भारत क्लाइमेट स्टार्टअप वेंचर स्टूडियो, जहां पर हम जो Tier 2 Tier 3 के स्टार्टअप्स हैं, मेरे पास स्टार्टअप्स हैं लद्दाख से, मेरे पास स्टार्टअप्स है वेस्ट बंगाल से, उन स्टार्टअप्स को हम स्केल करने में हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट का पार्टनरशिप्स करते हैं, उनको फंड रेज में हेल्प करते हैं. एंड वी ऑल्सो लॉन्च्ड आवर ओन, लाइक इट्स कमिंग नेक्स्ट ईयर एक्चुअली, 100 crore fund that will support climate startups in India. So that's prematurely majorly what we do. Congratulations, Shweta, on the remarkable work that you have been doing since long years. I'll next come to you, Debdarshan. Of course, an entrepreneur from the soil. So, तमे जेते बेले भाबिलो कि मते ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस को जिबार अछि, एक तो तारा टर्मिनोलॉजी एते डिफरेंट, डिफिकल्ट लोकों को कन्विंस करबा. सो तमे तम आइडिया को नेकी केमती गलो मार्केट पाखु. Okay, thanks Durga, thanks for inviting me here. Green tech की green entrepreneurship ओडिशा रे बहुत आगुरु अच्छी, but in various stages. किंतु आमे जदि सतरे देखिवा इनोवेशन बेस्ड और ट्रू स्टार्टअप ओडिशा रे बहुत कम अच्छे. ग्रीन स्पेस हो कि नॉन ग्रीन स्पेस हो, इन जनरल आमर ओडिशा रे इनोवेशन बेस्ड और एक्चुअली ट्रू स्टार्टअप्स बहुत कम अच्छे. तार गोटे दिटा रीजन अच्छी. गोटे हूँ कि रिस्क एपेटाइट ओडिशा रे टिके कम. आमे देखो कि किसी गोटे आइडिया ऑलरेडी प्रूव्ड अच्छी, आइदर यूएस हो, यूएस ना दिल्ली रे प्रूव्ड अच्छी कि बॉम्बे रे प्रूव्ड अच्छी कि से आइडिया को लेकिन एटी करदेले चलिबो. With all due respects, एवढा को भल businesses, profitable businesses, but I will not categorize them as startups. Like you rightly said, startups are innovation is very, of course, scalability is there. Innovation को बहुत बड़ा factor. Now, innovation है पारे in terms of new tech, brand new tech. मु गोटे fusion technology बनेली, पूरा brand new. Innovation could be of a location, something which is applicable in New York. आमे जदि ताकू आनी की देखिलु कि भुवनेश्वर सेटा एप्लीकेबल होउची कि तार नुआंसेस रहइबो, काहे भुवनेश्वर आम सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलगा अछि, आमर एटी थॉट प्रोसेस अलगा अछि, लोकंकर परचेसिंग पावर पैरिटी अलगा अछि. सो चेंजेस आसीबो, बट आमे बाहर मॉडल आनी की ताकू इनकॉर्पोरेट करके करि परिबा, सेटा भी गोटे इनोवेशन हेई पारे. बट देवदर्शन संपत सर सुनुचंदी, डू यू थिंक दैट ओडिशा प्रिपेयर्ड ग्रीन टेक स्टार्टअप्स मन को पई? Okay. In the आजिका एज रे AI and with all the tools that we have, जदि आपण पाखरे इंटरनेट अच्छी and you have the wherewithal, आपण पाखरे चिंताधारा अच्छी करिबा पई आ इच्छा शक्ति अच्छी हेई परिबो, किछि असुविधा नै. मो स्टार्टअप GoCarbonPositive हमर सबु जाक टीम होचंती ओडिसा रो. They are not Odias, not all Odias. तो गोटे बंगाली अच्छी, गोटे बिहारी अच्छी, दीटा ओडिया अच्छी, आउ दीटा सीजन्ड पिला अक्रॉस दी भी आछंती, किंतु समस्ते हैंड पिक्ड फ्रॉम भुवनेश्वर. But this is true that Odisha can also gear up to bring out a workforce which is ready to work in the green tech startups, right? Yes, it's difficult. It's not as easy because देखो तो बैंगलोर जदि मुझे कि खोजी भी मते 100टा कैंडिडेट मिली जिवे चूज करिया पे, ओडिसा रे मते 10टा मिलिबे. सो जदि मु 2टा पिला को हायर करिवि मते ओडिसा रे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हैज टू बी, आई मीन द स्क्रूटिनी हैज टू बी लिटिल बिट lenient. बैंगलोर रे गले
if I have the cash, but the interesting fact is कि से 100 पिला भी ओडिशा रू ही जाई थांदी बैंगलोर को. Add unfortunately, on this part, like We'll come back, Odisha yeah. wale part pe. So I was the advisor at ACIC GIT University in Odisha, yes. and I happened to speak with a lot of students जो climate में interested थे. जो आपका workforce वाला है ना, अगर उड़ीसा के भी बिल्कुल locals में जाएंगे ना, आपको इतने सारे बच्चे मिलेंगे जो climate में आना चाहते हैं. And I think इनके platform के through जो आप कर रहे हैं, हम उनको train कर सकते हैं, skill कर सकते हैं. Correct. Very true. and Durga, I'll just add one more thing. A summer ame kaun karlo. We last year I was part of a lot of hackathons. So we handpicked 15 students from those hackathons to come and join my startup for free summer internship. They said it to their friends and all. In total, 40 students, they came, they were part of the internship program. Thanks to STPI for supporting it because they gave the space for it. But out of those 40, more than 50-60% they're already placed. Wonderful. Wonderful. That's a great So number to can be done. Prakarsh, I'll come to you at the end of this round. That you have chosen a space which is absolutely green when we talk about EV, electric vehicles in the mobility space. But again, you have chosen the logistics route. How was it? Why did you thought about it? And how is it going on? First of all, Har Har Mahadev, Jai Jagannath. And I'm very privileged to be here. So how it all started, back I was in US for 4.5 years. और वहाँ से I saw how the logistics sector is how organized and the way they are very organized. And contrary, if you see India, we still are organizing the logistics sector, which is very important. Backbone of any economy is the logistics sector. And if you see, Indian government is doing absolutely great in bringing down the cost to GDP ratio for logistics sector. Still we are at a higher side. In developing nations is still, it is in first digit, and still India is wanting to come down to first digit. We are 13% of the GDP. With greater effort by Nitin Gadkari ji and government of India, it's still coming down, but it's not organized still. So I saw a gap there where we can organize this sector, but how can we make this sector sustainable? That was the biggest issue for me. I personally felt I was here, I came back from US after 3.5 years. I was in India, and that was the Parali season in Delhi. जब सब लोग choke करते हैं, I choked, my respiratory symptoms I had. I went to AIIMS. Their doctor told me that because of the air pollution and current air pollution condition in Delhi, you choked. That was an eye-opening for me that I want to organize a sector which is largest carbon emitting sector in India, and that is logistics. More than 50% of the carbon emission, especially in the intra-city, inside the city, comes from the logistics. So that was my problem statement, and I needed to, and luckily that time Niti Aayog published a report, ZET report, where government is pushing hard and there are tailwinds from government to make this intra-city logistics to green logistics. And there I chose this iLine, India line, where we have already onboarded in Delhi NCR more than 15,000 EV drivers, only EV drivers on our platform. And we do carbon neutral deliveries, roughly about, we have saved 1 lakh kilograms of carbon in merely 6 months of time. So that was my main motivation, my personal, what I felt, and I replicated the problem statement. And then again you asked, what is a startup? I would say a startup needs funds. That is the most important thing, and a tailwind from policymakers like sir. If there is tailwinds from policymakers and funds, then only you can build a sustainable, profitable and scalable startup, I would say. Excellently mentioned. From genesis of startups, I will come to the second big important component, which is the market. And when we talk about industries who need to adopt these innovation technologies, my question to Prakarsh again would be that when we see industries, they often have some kind of hesitance, some kind of reluctance, in fact, to see that how do we get more into the greener space. It's not just about the core technologies again. I'm very glad that this conclave, which is being hosted by a media group,
Even when we talk about the media industry, you could see that the kind of churn, the kind of transformation media has also undergone from a very long period of time, may it be in the publishing media, in the print media, or in the electronic media. The kind of work-life balance people talk about, the kind of emerging technologies which has disrupted the market entirely. Today people don't watch TVs or read newspapers the way they were used to do earlier. Digital transformation have been so rampant, there have been layoffs, people have been moving out of their jobs, there's a lot of chaos in the mind of people. And how do startups fit in into that kind of environment? So I'll be again saying the first thing, if you have funds, right, you can sustain and build a sustainable startup. And obviously in the current era with so much of chaos around, it's difficult to build startup, but if for a startup to be future proof, if you build on trend, that is inevitable, not an optional. By that I mean the inevitable trend is green, especially green logistics, other than other green players as well, and climate. Then you make your startup future proof, and that is where you tend to solve problem. That is the India first problem. If you solve India first problem, then only you can scale globally. And if India is a marketplace where if you solve a problem in Indian subcontinent, I'm sure you can solve it somewhere else as well. Very rightly said. Thank you so much for bringing out that point. Debdarshan, we take it to again the same scenario that जेतबले आमे innovation और technology को embrace करिवा कथा कहूचु आम industries माने केते prepared अछंती कि से माने industry 4.0 की industry 5.0 रो transformation रे startups मान को संगे हाथ मिसेवा पई और तांको innovation को imbibe करिवा पई. Okay, देखंतु innovation आपण इंडस्ट्री 4.0 नियंतु इंडस्ट्री 5.0 नियंतु इनोवेशन गोटे एस्टाब्लिश्ड प्लेयर को फॉर एग्जांपल नालको हो गला एनटीपीसी हो गला सेमान को इनोवेशन को अडॉप्ट करिया पे बहुत असुविधा हुए तांकर बैरियर ऑफ एंट्री बहुत हाई अछि काहे कि ऑलरेडी गोटे नियंतु जदी मोर गोटे प्लांट अछि जोटा कि ऑलरेडी 5000 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन रिलीज करूछि जदि मु ट्रू सेंस रे गोटे नुआ प्लांट लगे चाहिए इट विल कॉस्ट मी प्रॉब्ली फ्यू बिलियन डॉलर्स सेते इन्वेस्टमेंट से माने करि परिबेनी से माने सबले छोटो इंक्रीमेंटल चेंजेस नियंती तो सेति पय स्टार्टअप्स माने जेतेबेले आपण माने नुआ स्टार्टअप बनौचंती नुआ कंपनी करचंती नॉट इवन स्टार्टअप नुआ कंपनी बनौचंती प्लीज थिंक लॉन्ग टर्म गोटे इनसे मन रखिए कंपनीज नाउ बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी इज द कंपनी शुड लिव ऑन फॉरएवर मु जदि कहबी मु एटी प्लांट गोटे लगाउची आ से प्लांटटा 100 वर्ष 200 वर्ष चलिबो जदि मु एनवायरनमेंट को कंसीडर करिबेनी 20-30 वर्ष रे से प्लांट भी खत्म हो जिवो बिकॉज आई एम डैमेजिंग द एनवायरनमेंट अराउंड मी सो इट्स इन द इंटरेस्ट इट्स ए वेरी कैपिटलिस्टिक कॉन्सेप्ट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होची टाइम फ्रेम आमे जदि टाइम फ्रेम मु जदि देखि 2 वर्ष I can damage the environment. But if you look at the time frame as 20 years, 30 years, then you will realize that environment is a big factor. So to be conscious, my only input, both for large organization and smaller organization and for startups is, please think from the time frame point of view. Where do you see your startup, where do you see your organization live for how many years? If you think the perspective is 40, 50, 60, 100 years, you will consider more emission कौन अच्छी, you will consider more employees ठीक है कि नहीं, and all those things. Very rightly point out. श्वेता, आप अगर हमें ये बता पाएं कि क्योंकि आपने इतने सारे क्लाइमेप्रीन्योर्स के साथ काम किया है, जब ये इंडस्ट्रीज में या फिर मार्केट में अपनी एंट्री ढूंढने जाते हैं तो उनको क्या नॉर्मली चैलेंजेस होती हैं और वो कैसे इसको नेविगेट करते हैं? जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि फंड्स की बहुत जरूरत होती है स्टार्टअप्स को. फंड्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और मैं ये बात सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस रूम में ना यूथ बैठा है. तो प्लीज ये मत सोचना स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले कि जब तक मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ का फंडिंग का चेक नहीं आएगा मैं तो स्टार्टअप नहीं कर सकता, नहीं कर सकती. There have been so many people in the history जिन्होंने स्टार्ट करा है. आई थिंक सुधा मूर्ति एंड मिस्टर नारायण मूर्ति जी की कहानी हम सबको पता है. तो कंपनीज बनाओ, लेगेसी कंपनीज, बी इट क्लाइमेट, बी इट सस्टेनेबिलिटी, बी इट एनी अदर सेक्टर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फंड्स, अगर आपके स्टार्टअप के प्रोडक्ट में दम है, अगर आपकी सर्विस में दम है, तो आज कॉर्पोरेट आपसे वो सोल्यूशन मांग रहा है. फॉर एग्जाम्पल अभी जब यहाँ पर वो बात कर रहे थे वेस्ट रिसाइकलिंग में, आजकल सोलर पैनल रिसाइकलिंग इज वेरी इन.
कितने स्टार्टअप्स हैं जिनके पास एक्चुअल सोल्यूशन है सोलर पैनल रिसाइकलिंग का? आज बहुत सारे ऐसे बड़े सोलर फार्म मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कहते हैं कि हम आपके टेक्नोलॉजी पार्टनर बनेंगे, वी विल फाइंड द सोल्यूशन, आप डेवलप करो. सो फाइंड आपका जो स्टार्टअप की जो इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री है, कहां पर आपके स्टार्टअप का जो सोल्यूशन है कहां जाके वो एक्चुअली पजल में फिट बैठेगा. और एक बार वो पजल में फिट बैठ गया, मेक दैट इंडस्ट्री योर फर्स्ट कस्टमर. सो बी वेरी स्मार्ट. प्लीज खुद को केज मत करो कि मुझे सिर्फ वीसी मनी चाहिए, मुझे सिर्फ HNI मनी. येस, इंपॉर्टेंट है. आई एम ऑल्सो हेल्पिंग माई स्टार्टअप्स रेज, बट प्लीज लुक फॉर कॉर्पोरेट पार्टनर्स. प्लीज लुक फॉर people who are ready to buy your solutions. Shweta, funding and financing for climate-based startups is a big challenge, not just in India but worldwide. And that is why many climate tech funds, both from agencies which are linked with United Nations and even corporate venture capital, are looking in that direction, might be as a component from CSR also. And Odisha needs to think about it at a very stronger sense. We are very much grateful that we have the Honorable Development Commissioner, Ma'am Anugag Ma'am over here. Welcome, Ma'am. And this is something that should be policymakers should be more thinking about, which is about regulatory frameworks for climate tech startups. Debdarshan, you have been working in that carbon footprint and carbon credit domain entirely. Tama vision kon tame kon, if you would like to give a suggestion, we have quick 4 to 5 minutes, very shortly in 1 or 1.5 minutes, if you can say ki what should be the new age policies for climate tech startups. राइट एथरू गोटे जिनस मु पॉइंट आउट करी जदि आम कार्बन क्रेडिट्स कथा कहे और द वेरासिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया रे जो कार्बन क्रेडिट जनरेट होची इंटरनेशनल मार्केट रे तार वैल्यू होची ओनली $5 to $7. इन कॉन्ट्रास्ट इंटरनेशनल मार्केट रे मीडियन एवरेज जदि आम देखिया प्राइस रोची $35 to $40. सम केसेस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है इट गोज अप टू $80. So $5 versus $80 or at least $30-40. डिफरेंस एथिपाई रोची कि इंडिया रे जो कार्बन क्रेडिट जनरेट होची, कार्बन क्रेडिट माने मु गछ लगेली, मु 10 एकर गछ लगेली, से गछरु जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होला जमी रे स्टोर होला, सेटा ओवर ए पीरियड टाइम गोटे सर्टिफिकेट हिसाब रे आपण बिकी परिबे. नाउ एई जो वैल्यूटा हला सेटा इंटरनेशनल मार्केट तार लो वैल्यू एथिपाई अछि काहे कि आमर ट्रस्ट फैक्टरटा लो अच्छे. से ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस आमे ये कहलु रिवर बेड कथा कहतलु, आमे एफरेस्टेशन कथा कहूँ, जिते सब एक्टिविटी अच्छी से सबुथिरे जदि आमे डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करिया एंड ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी जोटा यूज करी हबो, सेटा करले सेटा को चेंज करी हबनी, फज करी हबनी. जदि फज करि परिबेनी आपण इंटरनेशनल मार्केट कहि परियो कि एटा हमर रिकॉर्ड हेतला, एटा ट्रू अछि एबे जाय आपण चेक करि परिबे. जमिति ऑडिट रिकॉर्ड्स वे जमिति फाइनेंशियल ऑडिट्स थाए एटा गोटे ग्रीन ऑडिट परि रहिबो. So technology can be used and should be used. No, absolutely. I think Odisha is at an overhaul change of policies, and this input is definitely required that we look towards emerging technology. With this, Prakarsh, if last comments from you, that in this struggle between good enterprises making financially viable enterprises versus taking care of the planet Earth and becoming sustainable, what are your views on this? So my views on that is, in spite of waiting for the next wave to come, you should position yourself. It's exact at the position where the wave is coming. And that wave for India is green, tech, AI, sustainability, which is very important. So position yourself so that the wave comes to you and that wave is greener technology. Yeah, thank you so much. And lastly, Shweta, if you can tell us very shortly that all these young champs who want to become green entrepreneurs, what is the biggest source of motivation for them? आई थिंक यू आर लिविंग दैट मोटिवेशन एवरी डे. अभी सुबह से बहुत लोगों ने बात करी माइग्रेशन के बारे में, बहुत लोगों ने बात करी फार्मिंग के चैलेंजेस के बारे में. द नेक्स्ट गुड स्टार्टअप्स आर जो लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं. आपको नई जरूरत है दिल्ली, मुंबई या फिर इवन किसी और शहर जाने की, अगर जाने का मन है जाओ, बट आपके आसपास ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है ना, और उन चैलेंजेस को आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता. तो उस पे कैपिटलाइज करो, उसको सॉल्व करो. जब अपनी कम्युनिटी के लोग आके कहेंगे ना कि यार तूने हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन कर दिया, हमारी लाइफ सुधार दी,
जो अंदर से वो एक खुशी आएगी ना, वो कहीं और जाके नहीं आएगी. सो प्लीज डू दैट. एंड ऑल्सो आई लाइक टू ऐड, अगर मैं आपकी स्टार्टअप जर्नी में कहीं पर भी सपोर्ट कर सकती हूँ, प्लीज बेझिझक रीच आउट करना. आई लव टू हेल्प यू पीपल. Thank you. Thank you everyone for making it so short and crisp and with great clarity of the experience that all three of you as entrepreneurs and enablers have made a dent in the society. I think thank you so much to the entire group of Sambad and Kanak News for giving us this platform to discuss about startups and the new age enterprises who is not as a purpose of want or a purpose of likingness want to become green, but it's the mandate of today that we build more and more greener enterprises. With this note, we close the session today. In fact, in this entire campaign journey, we had an opportunity to reach out to the students in school and colleges under a Green Hackathon and Green Innovation Challenge. The enthusiasm and the passion that we see in the eyes of the students here, and because Odisha is the most empathetic ground for environmental related concerns, I think any state in India which can excel and become a breeding ground of enterprises which are green in nature is Odisha. Odisha's O stands for opportunity, and that is what this summit will also prove again, that we will build more and more futuristic and future-proof green enterprises for a better tomorrow, for a earth again. Thank you so much. With this note, we close today's panel on green enterprises. Thank you so much.